Good evening, everyone. Dear friends, today we are going to discuss alarm. In the traditional acupuncture, alarm points are very important. इनका नाम है अलार्म पॉइंट। अलार्म का मतलब क्या होता है? There is a fire alarm. If somewhere fire, then there will be alarm. Or there is a morning alarm. When to get up, there is an alarm. Alarm means who can bring alert. जो alert लेके आए, जो एकदम से बोले कि बस उठो, do something. In the traditional acupuncture, भैया ताड़ी का ही पाठ है, बहना जी ताड़ी का ही पाठ। आपको वो दिखा देता हूँ ताड़ी का पाठ। In the ताड़ी what is there? ताड़ी plus stream, lu mushu and soxy. Here lu musu. Mu means mu front point. Su means Back-Shu point. Now we are going to discuss mu front point or the Back-Shu point. So first we are going to discuss mu front point or the alarm. So the other name of the alarm point are mu front point. Why the name is mu front point? Because these points are located in the anterior aspect of the body. हमारे शरीर के आगे की तरफ पाए जाते हैं. They are located at the anterior aspect of the body. And that's a very, very important point because lots of chi is gathering at that point, on the alarm point. Every meridian having one alarm point. If the person is having problem in the heart, we can see pain in the alarm point of heart. If any organ is in the disharmony, we will see the pain on the respective alarm point. अगर कोई भी organ डिफेक्ट प्रभावित होगा, इम्बैलेंस होगा, बीमार होगा, उसके अलार्म पॉइंट में आपको अर्ली वार्निंग साइन मिल जाएंगे. This point will become tender, this point will become painful, swollen, sensitive, and so we are using the alarm point for diagnosis as well as for treatment. We are pressing the alarm point if it is painful. So this is the diagnosis that you are suffering with this problem. And if we press this point, we also treat the organ. So when any organ become diseased, अगर कोई भी organ diseased हो जाता है, the mu front point or the alarm point become tender. Therefore, if we do the palpation on the alarm point, अगर हम alarm point में palpation करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो organ ठीक है कि नहीं. Suppose someone is telling you I am suffering with a heart problem. We press the heart alarm point and if no pain, तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारे मन का वहम है.
हार्ट में कोई प्रॉब्लम, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो पेट की है, गैस की है, इंडाइजेशन की है ना। सपोज समवन इज हैविंग chest pain, we will check the alarm point of heart, we will check the alarm point of pericardium, we will check the alarm point of indigestion or stomach. If stomach point is painful, other points are not painful, it means your heart is okay. But stomach having lots of gas, so you are feeling some suffocation in the chest. तो अलार्म पॉइंट के माध्यम से हम ये पता कर लेते हैं कि वो अंग प्रभावित है या नहीं है. So this is called the mu front point or alarm point. So there are total 12 alarm point. So we know we are having lung meridian, lung, large intestine, stomach, spleen, heart, small intestine, urinary bladder, kidney, pericardium, triple wormer, gallbladder and liver. So every meridian having one alarm point. प्रत्येक मेरिडियन का एक एक अलार्म पॉइंट होता है. लाइक वी कैन सी लंग 1, स्टमक 25, सीबी 12, लिवर 13, सीबी 14, सीबी 4, सीबी 3, गॉल ब्लैडर 25, सीबी 17, CB5, gallbladder 24 and the liver 40. हर एक मेरिडियन का एक एक अलार्म पॉइंट होता है. It might be anywhere, like we can see. The alarm point of the stomach is not on the stomach meridian, it is on the CB meridian. There are lots of alarm points in the CB meridian. We can see CB12, CB14, CB4, CB3, CB17, CB5. There are too many alarm points. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alarm points only in the CB meridian. हमारे 6 alarm point तो CB meridian में, like CB12, CB14, CB4, CB3, CB17 and CB5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Few alarm point on the same meridian, like liver alarm point is the liver meridian, gallbladder alarm point is the gallbladder meridian, lung alarm point is the lung meridian. But now we can see the alarm point of the large intestine on the stomach meridian. The alarm point of the gallbladder, the alarm point of the kidney on the gallbladder meridian. तो अलार्म पॉइंट किसी भी मेरिडियन में हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं कि स्टमक का अलार्म पॉइंट स्टमक में ही होगा. Before proceeding for the alarm point, let's discuss this thing here. Look at the CB meridian, because CB meridian is very important meridian. So let's see the other image. आप सभी लोग एक ऐसा डायग्राम बनाइए मुस्कुराता हुआ. Then make the bigger trunk. And this is the diaphragm. This is the navel area. On the front middle line,
हमारी फ्रंट की मिडिल लाइन से। दिस इज द सीबी मर्डियन हु इज पासिंग। ये हमारा सीवी मेरिडियन। और कंसेप्शन बेसल, द कंसेप्शन बेसल, द नेम ऑफ दिस मेरिडियन, और द रेन मेरिडियन। सो द नेवल इज, जो नाभि पर जो बिंदु होता है, on the navel this point is called CV8. Very important point, navel area। तो नाभि पर जो बिंदु होता है उसे हम कहते हैं CV8। क्या नाभि पर निडल लगाई जा सकती है या नहीं? नेवर। We never needle navel area। Whether we can do mocks out the heat treatment over the navel? Yes. If the person is having cold condition, if the person is suffering with a diarrhea, we can do moxibustion or the heat treatment around the navel, over the navel. Can we do cupping on the navel? Yes. Sometime if there is a navel displacement, we bring navel back with the help of cupping. But we not put needle on the navel area। अभी हम आपको ये नहीं बता रहे कि कैसे करना है कपिंग, कैसे क्या करना है। जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द नेवल। नेवल इज द CV8। नाउ इन द चेस्ट कैविटी वी आर हैविंग वन बोन। हमारे छाती में एक हड्डी होती है। दिस बोन इज कॉल्ड स्टर्नम बोन। What is the name of this bone? Is sternum bone। And here on the both side of the sternum bone, if you look at both side of the sternum bone here, there are two nipples। Okay, ये nipple, got it? In between the nipples, this is the point which is called CV17। इसे हम कहते हैं CV17। Exactly in between the nipple। Now look at the sternum bone। अब हम sternum bone को देख रहे हैं। Let's see the sternum bone in the other image। So we can look at here. This is the sternum bone। The point exactly on the upper end of the sternum bone, that is CV22। Point exactly at the lower border of the sternum bone is CV60। अगर आप स्टर्नम बोन के अपर कॉर्नर को देखते हैं वो CV22 है। And if you look at the lower border of the sternum bone, that is CV16, and the point in between nipple, that is CV17। थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि CV16 17 दूर दूर दिख रहे हैं।
Fine. I will show you the location of few points first. चले हम कुछ पॉइंट्स की लोकेशन को दें. First, I would like to show you the location of CV22, the upper end of the sternum bone. So we can see this is the depression on the upper end of the sternum bone, that is CV22 or the RAN22. Very good point for the throat infection. ये जो गले का खड्डा है यही CV22 है. We can see this depression here. This is called jugular notch. The other name of this point is jugular notch. In the TCM, this is a very good point for cough and cold. So this is the CV22. Now, if we go in between the nipple, look at the area in between the nipple. This is the CV17 or the RAN17, exactly the area in between nipples. CV17 is wonderful because CV17 is the alarm point. I will be discussing very shortly that CV17 is the alarm point of the pericardium. We can look at in this image. So this is the location of CV17, CV17. Now I am going in the area just below the sternum bone. I can feel that slight depression where the sternum bone is ending. This is the lower area of the sternum, or it is called Jiffy sternum. इसे हम कहते हैं CV16. Let's see in the image. We can see where we are feeling the lower end of the sternum bone. Now look at the navel area. Navel area is nabi hai. That is exactly the navel, that is CV8. Got it? Fine, wonderful. Now one more thing I will tell you. हम जानते हैं कि ये pubic bone है हमारी. We can see this is the pubic bone here. ये हमारी pubic bone है. Just below that we have genital part. So the CV meridian going from here, just upper end of the pubic bone, that is CV2. ये कौन सा point है हमारा? CV2. I will show you in other image. तो हम अभी देख रहे थे this is the navel region CV8. Now I will do the CV2. CV2 the points we can see exactly where we have pubic bone, जहां पर the upper border of the pubic bone होता है. That is the location of CV2 or the RAN2. So now look at here, this is the navel. Navel is CV8 or the RAN8. And here you can feel the pubic bone. The upper part of the pubic bone is CV2. If we make the line from navel to the pubic bone, अगर हम नाभि से लेके pubic bone तक एक line draw कर दें, this length is 5 चुन. ये दूरी 5 चुन होती. One more thing I will tell you here. So we have seen navel to pubic bone. So I would like to bring a focus on one more thing which is very important here. If okay, let's see the other image. एक बार हम दूसरी image में देखते हैं.
Look at here. So this is the upper part of the pubic bone here. And we can see to the CB2. And this is the navel area, that is CB8. For some time, you just forget the CB6. कुछ समय के लिए आप CB6 को भूल जाइए. ये भूल जाइए कि CB6 नाम का कोई पॉइंट होता है. Just forget the CB6. So just remember CB2, CB3, CB4, CB5, CB7 and CB8. हम CB6 को भूल गए. So the upper border of the pubic bone is CB2. Now if we just go one chun, that's CB3, one chun, then CB4, one chun, then CB5, one chun, then CB7, one chun, then CB8. So 1, 1, 1, 1, 1. 5 chun above we have navel. So we have seen from the CB5, if we go one chun above, that is CB7. Exactly in between we have CB6, in between CB5 to CB7. तो हमने देखा कि नाभि से प्यूबिक बोन तक के पॉइंट एक एक चुन की दूरी पर होते हैं. वन चुन, वन चुन, वन चुन, वन चुन. So now I will ask you a question and you have to reply me. Please tell me the name of point just above the pubic bone. What is the name of that point? Either you can write in the chat box or you can unmute and you can tell the number of points. CV2, sir. CV2. CV2. Now please tell me the point one chun above from the CV2. CV3. CV3, sir. CV3. CV3. Now please tell me the point one chun above from CB3. CV4. CB4. Now tell me the point one chun above from CB4. CV5. Now tell me the point one chun above from CB5. CV7. Yes, very good. Very good. This is CB7. CV7. Now I am coming. Okay, now tell me the point one chin above from CB7. CV8, navel Ulta point. chalte hain, ulta, reverse. Now from the navel, if we go one chun down, which is the point? CV7. Now from the navel, if I go two chun down, CV5. CV4. CV5. Two chun down, sir. CV4. CV5. Sir, navel, now sir. from the navel, if I go three chun down, CV4. CV4. Three chun down. CV2, now sir. from the navel, if I go four chun down, CV3. CV2. CV3. now from the navel, if I go five chun down, CV2. CB2. Okay, now please tell me from the navel, 1.5 chun down. CV6. I am giving you 2 minutes. Please draw the diagram from CB2 to CB8 and put in the group right now. 2 मिनट नहीं, चलो 3-4 मिनट ले लो. आपको एक डायग्राम बनाना है. उस डायग्राम में आपको CB2 से लेके CB8 तक के पॉइंट्स लोकेट करना है. CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7. अब CB6 स्किप नहीं करना. You have to write all the points from CB2 to CB8. Please write down immediately. And put in the group. So now look at here. If we look at the sternum bone, the upper border of the sternum bone, this is called jugular notch, or the location of CB22. And the lower border of the sternum bone, it is called Jiffy sternum, which is CB60.
Now here is the navel. ये नाभि है. This is the navel. The navel is CV8. नाभि क्या है? CV8. So from the navel, if we go one tune above, 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 one tune above. Simple math. So from the 8, then 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16. All the CV point coming in the sequence. So from the navel, if we go one tune above, CV9, then one tune above, that is CV10, then one tune above, that is CV11, then one tune above, CV12, the same. एक एक चुनो. चलिए question. From the navel, if I go 2 tune above, which point? Because navel is CV8. From the navel, if I go 2 tune above, which point will be there? You can also unmute or you can write in the chat. CV10. CV10 sir. From the navel, if you go 3 tune above, CV11. CV9. from the navel, if I go 4 tune above, CV12. CV12. please remember the 12. CV12. Please remember CV12. CV12. From the navel, if I go 4 tune above, the point is CV12. the CV12. CV12 is the alarm point of stomach. No, not alarm point of stomach. I will discuss. Alarm point of stomach ही है, Yes, but I will the discuss alarm once point again. of stomach. So CV12 is the very important point I will be discussing very shortly, which is the alarm point of the stomach. Exactly 4 tune above. Now, from the navel, if I go 5 tune above, which point? CV13. 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 From the 13 navel, I is go alarm 6. point of spleen. Oh, If sorry, from no. the navel I go 6 tune above, then which is the point? CV14. 14. If from the navel, if I 14. go 7 tune above, which is the point? CV15. CV15. If from the navel, if I go 8 tune above, CV16. End of sternum. now sternum bone starts. Okay, sternum bone is there. Yes sir. GV. Now, let's go in the reverse. From the lower border of the sternum bone or the GF sternum where CV16 is located, if I go 1 tune down, which is the point? CV15. 2 tune down. 14. CV14. CV14 is very important point because CV14 is the alarm point of heart. आप में से कई लोगों को यहाँ दर्द मिलेगा. आप क्या करिए कि जहां पर आपकी स्टर्नम बोन एंड होती है वहां से लगभग 1.5 चुन नीचे जाके दबाओ. From the where your this sternum bone is ending, keep the 2 finger where the sternum bone is ending. From that point, go 2 finger down and press that part. Very कई लोगों को यहाँ painful. Painful. है दर्द. Yes. टेंडर है. बहुत टेंडर होगा. Yes. Painful. ये एरिया है ना, सर पेंसिल एरिया. जो व्यक्ति जितना स्ट्रेस लेगा ये एरिया उतना पेनफुल होगा. हाँ पेनफुल होगा जी. हाँ एरिया सर जैसे SP21 पे बहुत पेन होता है ऐसी पेन होगा. हार्ट पेन है. Heart is CV14, but CV14, CV15, CV16, these all points become painful if the person is having stress in the heart and mind. CV15 के ऊपर CV14, actually CV14. Now please tell me from the lower end of sternum, from the GF sternum, if I go 2 tune down, which is the point? CV14. CV14, sir. CV14. From the sternum, down. lower out of the down. sternum bone, if I go 4 tune not down, which is the point? CV12. It means what we have understood. इसका मतलब हम क्या समझे? Yes, right. CV12 is central. हम ये समझे
what we have understood, this is the navel and this is the G sternum. The total distance of this part is 8 chu. And the midpoint will be at the 4 chu. Midpoint is CV12. जो midpoint होगा वो क्या होगा? CV12 होगा. Got it? So now I will ask few point once again. Tell me the location of CV17. Please tell me the location of CV17. Everyone. कहाँ पर point है CV17? Between the nipples. Between the the Right nipples. The two Between nipples. one above, Between the one nipples. above, sir. CV16 के बीच का. Yeah, in between nipples, right? हाँ, in between nipples. CV17 is the alarm point of pericardium. Pericardium. So if the person, and we know the pericardium is the protector of heart. If the person is having any problem with the heart, even the person is having any problem of the chest cavity, we use CV17, right? Okay, next. Now please tell me the location of CV14. CV14 की location बताइए. Two chun below Below sternum. CP. Two chun below the CV sternum bone end. 2 chun below the sternum bone. Zippy sternum. Two G sternum. Zippy process. CV14 is the alarm point of heart. If the person is having any problem on the CV14, if the CV14 is a tender, it so the heart is not peaceful. Shen is not peaceful. Person mind is not peaceful. CV14 is the alarm point of heart. When the person is having any problem, the heart, CV14 as well as the CV15 become painful, tender and painful. यानी CV14 के साथ में ऊपर का CV15 भी tender हो जाता है. Now please tell me the location of CV12. Between Between the center, between CV16 and CV8. So exactly in the center, in between the G below sternum to the navel, CV8 to or the fortune down from the G sternum, or fortune above from the navel. Above the navel. CV12 is the alarm point of the stomach. If the person is having any problem with the stomach, it will be tender and painful. Got it? Yes. Now, please tell me the location of CV5. Below CV5. 1, 2, 3. Navel is Three CV8. below. Two chun below CV8. Below CV8. Navel Three point. So chun from the below the navel, navel. Three chun 1 below chun below navel is point. CV7. Then Two again chun 1 below chun below navel. is CV5. CV5. So CV5 is the 2 chun below from the navel, and CV5 is the alarm point of. Remember 3 points. Triple warmer, SI and UV. मैं तीनों पॉइंट एक लाइन से लिख देता हूं. Remember these 3 point combination. Triple warmer, SI and urinary bladder. So CV5 for triple warmer, CV4 for small intestine, CV3 for urinary bladder. Got it? So CV5 is the alarm point of triple warmer. CV4 is the alarm point of small intestine. CV3 is the alarm point of urinary bladder. Okay, ये तीनों points हमारे alarm point हैं. So we have seen 3 point here. So anyone is suffering with the problem of the urinary bladder, we can use CV3. If anyone is having problem in the small intestine meridian, we can use CV4. And CV4 is also a very good tonification point. And these point also working for the problem of this part. If the person is suffering with the problem on the lower part, we can treat these point. So we चलिए just अब press it or put needle? हाँ हम उसे निडल लगाएंगे या प्रेस करेंगे, दोनों कर सकते हैं. We have to stimulate the point. सर वो एक बार पिक्चर फिर से दिखा दीजिए ना प्लीज. जो भी क्या डाला चलिए मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, तब तक आप लोग क्या करिए ना. make one image from आई दादा नकली फोन पाहिजे कोणाला मला तिथं ते घेऊन गेले ना ते
So now make one image from navel to the sternum bone. Means I am telling write down the point from CV8 to CV16. Make the image and send in the group. जिन लोगों ने इमेज बना ली है वो क्विज करिए. मैंने अभी क्विज एडमिन ग्रुप में डाली है. डू द क्विज इमीडिएटली. यू आर गेटिंग. So now we will be discussing the quiz. Kindly someone unmute yourself and start reading the question number 1. So shall I read? Yeah. First question. CV2 is located at the upper border of the pubic symphysis. Or border of pubic symphysis. What? B. So the answer is upper border of the pubic symphysis. Yes. Question number 2. CV3 is located. Hmm. Panchun below. No. Portion below the umbilicus. Portion below the umbilicus. B answer. B portion below the umbilicus. Fortune below the umbilicus. With the right answer. CV4 is located. CV4 below the umbilicus. Three below the umbilicus. Now 3 tune below the umbilicus. Now please tell me. CV4 is very important point because it is the tonification point. CV4 tonify yin, CV4 tonify yang, CV4 tonify blood, jing, everything. And it is 3 tune below. So how to measure from the navel? 4 finger. Four From finger. the navel, if we keep 4 finger, then we will move to the CV4. And CV4 is the point. It is called very good point, single point in the old age. Old age, we can like not any old age, even after the age of 50 or 60 years of the age, we should do the moxibustion here. We should stimulate this point to enhance the energy and the power. ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था. CV4. Now question number 4. CV5. CV5 is located 2 tune below them. 2 June below. Question below the umbilicus. Question number 5. CV6 is located 1.5. B. 2 below the umbilicus. 1.5 below the umbilicus. Below from umbilicus. Question number 6. CV7 is located 1 June below the umbilicus. 1 June below the umbilicus. 1. Question number 7. 1 June below. 8 is located At the center of At the center of the At umbilicus. the center of the umbilicus. Center of the at the center of the Umbilicus. Question number 8. CV9 is located 1 tune above the 1 June above the umbilicus. 1 tune above the umbilicus. Question number 10. Sorry, question number 9. CV10 is located 2 tune above. 2 June above umbilicus. 2 tune above the umbilicus. Question number 10. CV11 is located 2 above the Above the umbilicus. 3 June above the umbilicus. 3 June. 3 tune above the umbilicus. Question number 11.
CV13 is नहीं, located CV12. CV12. T12 CV12. umbilicus. Fortune above the umbilicus. fortune above the Fortune above the umbilicus. Question number 12. CV13 is located Five tune above the five tune above umbilicus. the Five tune above the umbilicus. Fortune above the umbilicus. Question number 13. CV14 is located D6 tune above Six the tune above the umbilicus. Section above the umbilicus. Question number 14. CV15 is located Seven tune above the umbilicus. Ziphisternal junction. 7 tune A Zippy junction. Ziphisternal Above the junction. umbilicus or one tune below the chief sternum. Ziphisternal junction. Both are. Both is Both the are- same. Both are the right answer. Both is the same, no? Yes, yes. Both are the same. Question number 15. CV16 is located Ziphisternal junction. At the Jefferson junction. At the chief sternal junction. Question number 16. 15 is Level with the nipples on the anterior midline. B level with the B is middles on the sir. anterior midline. Level with the nipple on the anterior midline. So CV17 located at the level of the nipples and the anterior midline. Question number 17. which CV point is located at the center of the umbilicus? CV8. 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 Question number 18. Which CV point is located exactly fortune above the umbilicus? CV12. 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 Question number 19. Which CV point lies at the upper border of the pubic symphysis? CV2. CV2A. CV2. Question number 20. CV22 is located at the center of the Suprasternal The level of the suprasternal. jugular. हाँ वही उसी को जुगलर नॉच हाँ कहते हैं हाँ super- सॉरी सर. एक ही बात है. अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो आपको हो सकता है आधा समझ में आएगा आधा समझ में नहीं आएगा. कोई बात नहीं है. जो नहीं समझ में आएगा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा. सो लेट्स सी वन वीडियो. फ्रंट में होते हैं इसलिए इनको फ्रंट सू पॉइंट बोलते हैं. तो अभी हम समझ रहे हैं फ्रंट सू पॉइंट या अलार्म पॉइंट. ये सारे पॉइंट फ्रंट में होते हैं इसलिए इनको फ्रंट सू पॉइंट बोलते हैं. और इनको अलार्म पॉइंट इसलिए कहते हैं कि अगर किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है तो जो लंग्स का अलार्म पॉइंट है वहां पर पेन मिलेगा. किसी को स्टमक में प्रॉब्लम है तो स्टमक का अलार्म पॉइंट है वहां पर पेन मिलेगा. तो जिस भी बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है उसके अलार्म पॉइंट को जब हम ऐसे दबा के देखते हैं प्रेस करके देखते हैं और वहां पर दर्द और सेंसिटिविटी मिलती है तो वो हमारा डायग्नोस हो जाता है कि इसके लंग में प्रॉब्लम है या हार्ट में प्रॉब्लम है. फिर हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ये सेंट्रल मिड लाइन है. ये सेंट्रल मिड लाइन है. थोड़ा ऊपर से इस पर लीजिए. इधर आइए. ये पूरा पेट लीजिए. ये सेंट्रल मिड लाइन. तो सेंट्रल मिड लाइन में ये दोनों निपल की जो बीच की दूरी होती है ये होती है 8 चुन. हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं. देखिए ये 8 चुन होती है. अब इन दोनों निपल के जो बीच का सेंटर पार्ट है द मिड पॉइंट बिटवीन द निपल इसको हम बोलते हैं CV17. इसका नाम है CV17. जब हम इस बिंदु को दबाते हैं और यहाँ पर दर्द मिलता है तो ये बताता है कि कुछ ना कुछ पेरिकार्डियम में प्रॉब्लम है. तो हमारा जो CV17 फ्रंट पॉइंट है फ्रंट न्यू पॉइंट है पेरिकार्डियम का. इसके बाद हम इसी लाइन को आगे फॉलो करते हैं तो दिस इज द नेवल और ये हमारी स्टर्नम बोन खत्म हो रही है. ये लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम. इसे हम जीफी स्टर्नम भी बोलते हैं या लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम. यहाँ से नाभि की दूरी भी 8 चुन की होती है और इसका ठीक जो मध्य बिंदु है यानी जो 4 चुन की दूरी पर होता है इसका नाम है CV12 जो स्टमक का फ्रंट व्यू पॉइंट है. यानी जब हम इसको दबाते हैं और यहाँ पर दर्द मिलता है तो ये बताता है कि स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें स्टमक को ठीक करना होगा. अब हम CV12
और ये लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम ये ठीक मध्य में है। ये बिंदु जिसका नाम है CV14 जब इसको प्रेस करते हैं और यहाँ पर दर्द मिलता है तो ये हार्ट की कंडीशन बताता है। तो दिस इज CV12 इज द पॉइंट ऑफ स्टमक एंड CV14 इज द फ्रंट व्यू पॉइंट ऑफ द हार्ट। तो इस तरह से हमें सीक्वेंस में CV17 मिला पेरिकार्डियम का, CV14 हार्ट का एंड CV12 इज द पॉइंट ऑफ स्टमक। अगर हम इसी लाइन में नीचे चले जाते हैं तो दिस इज द नेवल और नेवल से 5 नीचे हमारी पीविक बोन होती है। तो इफ वी मेजर लाइक दैट दिस इज 3 चुन एंड दिस इज 2 चुन, ये 5 चुन नीचे यहाँ पर हमें मिलती है पीविक बोन। अब हम इस पीविक बोन पर जो पॉइंट होता है वो है CV2 या रेन 2। उससे अगर हम 1 चुन ऊपर आते हैं तो अगर हम सबसे पहले तो नेवल से 5 चुन नीचे चले गए तो हमें मिला CV2 ऑन द पीविक बोन। अब हम इससे 1 चुन ऊपर आते हैं, ये है CV3। इसका नाम क्या है? CV3। CV3 इज द फ्रंट व्यू पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर दबाएं और दर्द मिले तो यूरिनरी ब्लैडर में पड़े। अब CV3 1 चुन ऊपर है, कहां से? पीविक बोन से। अब हम CV3 से और 1 चुन ऊपर आ गए तो ये मिला हमें CV4। CV4 बताता है एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नीचे हमें मिला यूरिनरी ब्लैडर, उसके ऊपर मिला स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये हमें पूरा ताई यांग मिल गया। SI देन UV। SI मिला CV4 पर, तो ये दिस इज द लोकेशन ऑफ CV4 और यहाँ पर है हमारा ये दिस द फ्रंट व्यू पॉइंट ऑफ SI और उसके नीचे मिला हमें CV3 दैट इज द पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो इन दैट वे अगर हम इसी लाइन को और ऊपर जाएं तो हम CV2 से 1 चुन ऊपर आए तो CV3, अगेन 1 चुन अप CV4, अगेन 1 चुन अप दिस इज CV5, ये CV5। CV5 ये फ्रंट व्यू पॉइंट है हमारी ट्रिपल बार्बर का। The meaning of triple barber is circulation. The meaning of triple barber to keep body in good heat position, the keep circulation in good position. तो जब यहाँ पर दर्द मिले CV5 पर और काफी टेंडरनेस है, सेंसिटिविटी मिले, तो इसका अर्थ है कि सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है या ट्रिपल बार्बर की प्रॉब्लम। हार्मोन की प्रॉब्लम में भी हमें यहाँ पर दर्द मिल सकता है। तो हमें 3 बिंदु मिल गए यहाँ पर CV5, CV4 and CV3 means triple barber, small intestine and urinary bladder. Now, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा किसी को? नहीं समझ में आया ना? आ गया? Fine. So today we have understood these alarm points which is located on the CB meridian. So tomorrow we will be discussing the remaining alarm points. Okay, so today you prepared well these alarm points. So tomorrow we have to understand ribs. So first we'll be discussing about the ribs because there are many alarm points like liver 14, gallbladder 24 and liver 13, gallbladder 25. These points are in between ribs or near the ribs or the tip of the ribs. Spleen 21 is not the alarm point. Spleen 21 is the great Leo connecting point. Okay, वो alarm point नहीं है. Okay. So now we will continue the session tomorrow. Enough for today. Okay. आगे का session हम कल continue. Yes, बबीता जी. Now सर one more ये thing I would like to tell you. आपने जो भी पॉइंट्स एक बताए ना, minute, एक minute. So whenever we are making any protocol, suppose someone is suffering with a heart problem, we will take the alarm part of the heart and the Back-Shu part of the heart. It is very good protocol. We are taking front view point or the alarm part of the stomach or the Back-Shu part of the stomach. It is very good protocol for the stomach. So for any dysfunction, for any disharmony, we will be taking the front view point as well as the Back-Shu point combination, and it is very good point for that respective organ. जी बबीता जी. सर मैं बोल रही थी कि जैसे आपने अभी ये पॉइंट्स बताए और इतने इम्पोर्टेंट,
तो इसमें वो डूज एंड डोंट्स हमको अगर साथ में कि किस में नीडल लगाना है और किस में नहीं लगाना है, किस में खाली प्रेस करना है, अभी हम तो प्रोटोकॉल भूल आपको बनाना जाएंगे है। नेक्स्ट हम। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि हम अभी सीख रहे हैं ताड़ी प्लस स्ट्रीम लुमिसोन सॉक्सी। अभी हम प्रोटोकॉल्स बनाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। राइट हाँ, नाउ क्योंकि वो अच्छा जो लीवर का भी जो हमने पढ़ा है, मतलब वीडियोस देखे हैं, तो उसमें प्रोटोकॉल वगैरह जैसे पता चला, समझ में आ गया पैटर्न, पर उसके पॉइंट्स कुछ समझ नहीं आए मुझे कि कहाँ कैसे लगाना है। वो थोड़े बहुत जो आपने वीडियो में बताए थे वो पता है, पर बाकी ऐसे सब वो नहीं आपको पता। नहीं तो समझ में आए तो मेरिडियन में समझ में आएंगे। अच्छा, ठीक है। जिनको पहले से मेरिडियन पता है उनको समझ में आ गए, हाँ जिनको हाँ, मेरिडियन नहीं पता उनको जब मेरिडियन पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी मंजूश्री जी। नमस्ते सर। हाँ ना। सर इनको जो बैक शू एंड फ्रंट शू अलार्म पॉइंट अगर बहुत पेनफुल है, हमारा CV17 भी CV16 भी अभी जो हमने ट्राई किया, तो ये सब पेनफुल है, तो इन अगर पेनफुल है तो टोन करेंगे या सेडेट करेंगे? कुछ भी। टोन सेडेट केवल इस बात पर नहीं कर सकते कि पेनफुल है। पेनफुल है मतलब सम अलार्मिंग सिग्नल, लेकिन टोन करना है कि सेडेट करना है ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करे। सिर्फ इस बात से आप टोन सेडेट नहीं कर सकते, because someone is having weak heart, alarm point of the heart will be painful. Someone is having excessive energy in the heart point will be painful. Heart point will be painful in both condition. So just by looking the tenderness on the points, we cannot decide that we have to tone or sedate. उसके लिए हमें डिसीज के नेचर को समझना पड़ेगा। सर अभी मैं सफर कर रही हूँ, अभी आई एम सफरिंग विद सीवियर वीकनेस। अभी हम प्रोटोकॉल का डिस्कशन नहीं कर सकते। तो अभी मैं ये जो फ्रंट शू एंड बैक शू में लगाऊंगी तो स्टार मैग्नेट लगा सकती हूँ ना? यस यस। अभी आपको इवन मेथड का इवन मेथड वो मैं आज प्रोटोकॉल हम समझेंगे पूरा ताड़ी प्लस स्ट्रीम लुमसो एंड सॉक्सी सब मिला के हम प्रोटोकॉल बनाएंगे। अधूरा अधूरा प्रोटोकॉल नहीं बना सकते, है ना। ठीक है, तो अभी अभी आप मैं फ्रंट शू एंड बैक शू में इवन मेथड लगा इवन लूँ? मेथड कर लो। ठीक है सर। और नेवल नेवल से जो हम मेजर करते हैं, तो अगर सपोजिंग किसी का नेवल बहुत बड़ा है तो हम उसका सेंटर लेंगे, वहां से हम मेजर करते हैं हाँ वंचन, या कैसे हाँ करते हैं? हाँ सेंटर लेते हैं सेंटर और ले। वहां पर हम अपने फिंगर को रख के बीट को फील करते हैं। वी आर फीलिंग द बीट। बीट शुड बी इन द सेंटर ऑफ द नेवल। ओके। बीट इज नॉट इन द सेंटर ऑफ नेवल, सो इट माइट बी नेवल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो उस पर लोग कप करके उसे वापस करेक्ट करते हैं। कई लोग कपिंग के माध्यम से करते हैं उसे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू, यही क्वेश्चन। ये जसविंदर जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर जैसे CV17 में पेन आ रहा है तो सर उस वो ट्रिपल बार्म का ही साइन होगा ना सर? अगर CV12 में पेन आ रहा है, नहीं 70 में सॉरी। CV17 इज द अलार्म पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम। तो सर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम रह सकती है सर पेशेंट को? Pericardium is the protector of chest and the heart. So person might be having some chest condition, chest problem, maybe any problem which is having connect, because pericardium is the CV17 is showing that some problem is connected with pericardium. It is the alarm point of pericardium. Some problem in the pericardium. And what is the pericardium? Pericardium is the protector of heart. So either the person is having heart problem, but I will tell you, if the person is suffering with any chest condition, CV17 might be pain. Even the lung means any, like lung, heart, chest, muscles, anything which in the chest, we will see sometimes CV17 become tender and painful. अस्थमा भी इसमें शामिल है सर? It is very good point for asthma also. Many people are putting catgut on CV17 for asthma.
जैसे सर पेशेंट कहता है आके कि मेरा हार्ट वीक हो चुका है, मेरे को ऐसा लगता है मेरा जो हार्ट है वो मेरे को ऐसा लगता है उसमें कमजोरी फील, वीकनेस फील हो रही है, जी भी इसका ही सेंड रहेगा सर? तो हम हार्ट की कमजोरी में हार्ट और पेरिकार्डियम दोनों के पॉइंट लगाए, है ना। ओके सर, ठीक और है सर। हार्ट की कमजोरी में पहले हम पेरिकार्डियम के पॉइंट लगाए, हार्ट के पॉइंट भी दूसरे नंबर पे आए। हार्ट को जो ज्यादा कंट्रोल करता है वो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का ही दूसरा नाम है प्रोटेक्टर ऑफ हार्ट, और हार्ट का दूसरा नाम है जो मन है, मन को हार्ट बोलते हैं। इफ द पर्सन इज सफरिंग विद सम इमो लाइक एंजाइटी, some mind problem, some psychosomatic problem, we will be focusing more on heart meridian. But if the person is suffering with a heart problem, we are focusing on pericardium. लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम हार्ट को पूरा इग्नोर करेंगे, हम हार्ट के पॉइंट भी लेंगे, है ना, लेकिन पेरिकार्डियम को भूल नहीं सकते। सर मैंने 8 पेशेंटों पर लगाया ओनली CV70 सर, जी। जिनको अस्थमा भी था और उनको इस पॉइंट में पेन भी आ रहा था। तो सर वो उन्होंने बहुत गुड फील किया इसमें, खाली Yes. एक सिट डाउन ही किया था सर मैंने, और कुछ नहीं किया। CV17 is very good point for any problem of the chest, including asthma, bronchial asthma, any asthma. Right? It is very good point. Thank you so एक much. पेशेंट तो मेरा स्टाफ ही था सर, उसके मैं एक बार ही सुई लगाई थी, आज तक उसको अस्थमा नहीं हुआ दोबारा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वंडरफुल। आपने कॉम्बिनेशन में और भी पॉइंट लगाए होंगे, है ना। नहीं सर, ओनली सिर्फ CV70 सर। वेरी गुड। CV17 is very good point. Like we can see, Jashwinder ji has treated one patient of asthma just by CV17. Okay, CV17 is a very good point for the chest. वो Excellent. मेंटेयर एलसी खा रहा था सर, उस उनके बाद उसने मेंटेयर एलसी नहीं खाई। Very wonderful. Keep doing. Yes, Murthy ji. थैंक यू सर, थैंक यू। Yeah, Murthy ji. नमस्ते गुरु जी। मेरा बेटा का अम्बिलिकल ग्रानुलोमा से फ्लूइड यूज होता रहता है, तो काफी दिन हुआ है, वो कम नहीं होता है। किडनी 3 और किडनी 5 लगाया था, फिर भी काम कम नहीं हुआ कुछ। आपका मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। अम्बिलिकल अम्लाइकल, हाँ हाँ, अम्लाइकल। some kind of fluid is oozing from the navel. Okay. So what is the age? Age is 24, sir. How much? How much age? 24. Okay, 24 years of the age, and some fluid is oozing out from umbilical region. He's a young person, right? हम प्रोटोकॉल में डिस्कस करें, अभी तो पॉसिबल नहीं है डिस्कस कर पाना, बिकॉज इसे हम ऑम्फेलाइटिस बोलते हैं। ऑम्फेलाइटिस जो कंडीशन है, अम्बिलिकल इन्फेक्शन है। दिस इज वन टाइप ऑफ द अम्बिलिकल इन्फेक्शंस। अगर इन्फेक्शन है तो ऑम्फेलाइटिस है, अगर इन्फेक्शन नहीं है तो फिर और कंडीशन हो सकती। सो वी हैव टू डू द प्रॉपर, वी हैव टू थिंक मैनी पॉसिबिलिटी। तो इसका हम डिस्कशन करेंगे ड्यूरिंग। पस निकलता है, उसमें कई सारी चीजें सोचनी होती हैं, लाइक वेदर द फॉल स्मेलिंग पस इज कमिंग आउट और द नॉर्मल पस इज कमिंग आउट, है ना। बिकॉज पस इज हैविंग टू क्वालिटी, कि जब पस फॉल स्मेल वाला होता है तो वो हीट बताता है, और जब पस विदाउट फॉल स्मेल वाला होता है तो मतलब वो हीट नहीं है, वो डैम्पनेस है। So it might be only dampness, it might be damp heat. So what I want to tell you, if there is some oozing is from the navel, so we have to think in many perspective. हमें कई perspective में सोचना। तो आप पूछिएगा प्रोटोकॉल के समय तो हम डिस्कस करें। अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि
इसके लिए और भी पॉइंट लाने पड़ेंगे। ओके, एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Yes, I will share the link of CV Meridian. Sure. आप खुद भी डाल सकते हैं, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत शर्मा, CV मेरिडियन, आपको वही लिंक मिल जाएगी, एक दो लिंक और भी मिल जाएगी। यस सदाब अली जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर हमें कुछ एक बात शेयर करना थी। बोलिए। सर हमारे पास एक पेशेंट आए थे 15 दिन पहले, तो मतलब उनको हमने 15 सीटिंग दी है और उनकी T12 L1 कोलैप्स हो गई थी। गाड़ी में जब सफर कर रहे थे उसके दौरान एक लेडीज पेशेंट है, तो उनको कोलैप्स हो गई थी उनकी डिस्क, और L4 L5 में डिस्क बल्ज था। तो सर वो जो थे उनको हाथों पे लेके आए थे, मतलब उनसे चला भी नहीं जा रहा था ना बैठा जा रहा था। अब सर हमने 15 सीटिंग उनकी आज हो गई कंप्लीट। तो अब सर रिजल्ट ये है कि अपने पैरों से खुद चल के जा रही हैं सर। और सर आपके सारे प्रोटोकॉल हमने अप्लाई करे हैं, जो पैटर्न आपने पैटर्न बताया। अब देखो, आप है ना, अगर आप इतना अच्छा फीडबैक देते हो तो आपको पॉइंट भी बताने चाहिए कौन कौन से लगाए। सर अब आप बोलोगे कि यस सर, आपके सारे पॉइंट लगाए, तो मैंने तो यस बहुत सारे पॉइंट सिखाए हैं, कभी डॉक्टर बोल सर। बताए, लीवर तुम बताए। नहीं, लीवर चीज स्टेगनेशन, हार्ट yin डिफिशिएंसी, किडनी yin डिफिशिएंसी, सर इसमें पे हम काम करते हैं और सर वो काफी अच्छा हमको रिजल्ट आपके आ गया। पास जो पेशेंट आया था उसको आपने किडनी इन डिफिशियंसी के पॉइंट भी लगाए, हार्ट इन जी सर, डिफिशियंसी के भी पॉइंट लगाए, यस सर। और और लिवर ची सर स्टैग्नेशन के पॉइंट। इसका अर्थ ये है कि सदाब अली जी हैज ट्रीटेड वन पेशेंट not just by seeing the L4 L5, he has seen the symptoms of liver chi stagnation, he has made the diagnosis that this person is having yin deficiency of the kidney, yin deficiency of the heart, and he had treated and got the very good results. This is really very good. If you have done this, very nice. So when the person is coming with a lower back pain, some patient might be having yin deficiency, some patient might be having yang deficiency. I think I will discuss more in the pattern diagnosis. Okay. In the kidney, that everyone will understand. Thank you so much, Sadab ji. You are doing very good, wonderful. सर उनको सर उस पेशेंट को बीपी और शुगर भी थी सर, उनको ये प्रॉब्लम भी थी वो काफी भी हद कम हो तक। गया, अब जी सर, डॉक्टर वॉल के सर पॉइंट जोड़े हमने उसको, फिर वेरी किया उसको ठीक करने की कोशिश करी, वो गुड, भी अब वो गले वाली थी, काफी अच्छा रिजल्ट है। excellent, very nice. Thank you. So now thank you so much everyone for sharing a feedback also everyone, and those who had asked the question, please don't be unhappy. I will be discussing your protocol, your respective protocol on the right time when everyone can understand. If I discuss, everyone can understand. So let's close the session today. आज की क्लास को यहाँ पर हम विराम देते हैं, अब हम कल मिलेंगे। Thank you and good night. Thank you.